to episode number 5. We have the one and only Zainab Malik. And we're in Mirha today. So, there are a lot of things to like बात करने में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन I really want to know कि what's your journey, who you are, because we just know कि there's a niche magazine there, there's a niche social media there, like एक चीज़ but nobody knows what's happening in the background. पीछे background पे क्या होने लगा हुआ है. So how you started niche, क्या scene था इसके पीछे और So I remember the first thing I remember is that all my life, since I've joined this industry, I've said, hi, my name is Zainab Malik and I'm from Niche Lifestyle. So this came so repetitively. आराम से इतने निकल जाता था कि कहीं कहीं कि मैं किसी दोस्त के घर भी जाती थी तो मुझे कहना पड़ता था तो मैं कह पड़ती थी हाय आई एम ज़ैनब मलिक एंड आई एम फ्रॉम निश लाइफस्टाइल एंड एवरीबॉडी वाज लाइक ये तुम पूरा नाम क्यों कहती हो मैंने कहा यू नो द प्रेशर आई feel the whole thing going on. So I don't know, a lot of people don't know this, but I am in an ACCA and a master's in economics. what? Whoa. Yeah. You're giving like a lot of surprises. Yeah. Lot of surprises. Yeah, I had no idea. So, I did my articleship for a stock exchange, brokerage firm, UK based, but I was in Karachi. Achha. And then I Okay. worked for Deutsche Bank for a while. And then I came to Lahore. So like a hardcore 9 to 5. Yeah, finance Okay. kid. You know, a Taurus woman who loves money. Oh, you were a Taurus too? Okay. Yes, and magazine came in. Magazine was already up and running when I joined. This was in magazine. Niche Lifestyle came out in 2008. 2008. 2008. What was the like idea behind like your? So it was my sister-in-law actually. My sister-in-law started the magazine. My brother and my sister-in-law, and the woman has an eye for fashion, Okay. and she's amazing at it. And she didn't want to earn money out of it. She just wanted to promote good fashion. That was it. And there was no, she has no proper training, or as for me also, I don't have proper journalism in my, I have in my study area academically, but she had an eye and she was excellent at it. And at times I would just walk into the office and, you know, she would just say कि ये करना है, ये करके देख लो. अच्छा magazine की edit तो देखो, कुछ समझ आती है. And it was just for fun, nothing great. I was actually teaching O levels and A levels. Economics, business studies and accounts at that time. Crash courses कराती थी. And destiny had it. I went through a divorce, and I was going to go in for an interview. I was offered an interview at a similar publication, and I was going to go. And I remember my brother sitting, and he said, "Where are you going?" I said, "I'm going for an interview." And he's like, "What are you going for?" I said, "It's a fashion magazine." And he's like, I don't believe it. We have one at home. We're doing it. Why are you not? And you know, that's where it hit me. कि हमारे पास अपनी एक है, तो मैं क्या कर रही हूँ? So I have to give credit to my sister-in-law. She was 8 months pregnant. We are shooting a shoot. It was Hani Wakar's shoot. That's your Oh, first. nice. That was my first day at work. Okay. First day. Yeah. 2008. 2010. Yeah. So you were 2010. hired like. But उस वक्त पाकिस्तान मुझे में कहा fashion scene क्या था? Fashion ही तो था. उस टाइम पे It was all about hard work बहुत थी. मतलब मेहनत बहुत थी. Photographers इस तरह मैं ये नहीं कह रही कि अभी मेहनत नहीं है. like Howard Riaz वाले days. हाँ ये ख़ावर रियाज़ था शहजाद वाले डेज. मेहनत इस तरह थी कि मेहनत तो अभी भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. I mean the creativity you see now was not उतनी नहीं थी. Manual था. मैनुअल था ना सब कुछ. यहाँ पे I think sitting with a young 24-year-old kid right now will give you more knowledge than sitting with anybody. I mean, I can't give that much of knowledge to you. I would Yeah. prefer to have a young Gen Z sitting with me, telling me something because I would learn something. We तो help. हाँ, I'm for sure that's the way forward. उस वक्त ये था कि शूट हो रहा था. अब शूट भी होने बहुत लंबे 12-12 घंटे की शूट जो अब 4 घंटे में खत्म हो जाता है, राइट? सो मूड बोर्ड भी होता था तो वो चार्ट पेपर पे मूड बोर्ड बनता था. So I had to take a chart paper to Shahzad Bhai. And again, this was that career time when Shahzad Bhai, I started my career with him. And it was... Wow, a lot of people started, काफी लोगों ने वहाँ से. And वो बड़े बहुत अच्छा समझाते थे. Pioneers. हाँ वो समझाते बड़ा अच्छा थे. और so my sister-in-law, उस दिन तो I just walked in.
मैंने कहा कि चलो मैं देख लेती हूँ कैसा है शूट। इमाद इरफानी और सिबिल चौधरी का शूट था एंड वी हैड टू क्रिएट अ सीन ऑन द रोड। हमने रोड के ऊपर एक कारपेट लगा के उस पर ट्रंक रखा था एंड शी वाज सिटिंग एंड देयर वाज द बीम लाइट, पीछे से एक गाड़ी मर्क की आ रही थी। इट वाज ब्यूटीफुल। आई मीन हार्ड वर्क एंड एक्सट्रीम हार्ड वर्क होता था। एंड तो वो शूट ख़त्म हुआ तो शहजाद भाई ने पूछा कि ये कौन है, तो पश्मीना माई सिस्टर इन लॉ सेड दैट शी इज़ माई सिस्टर इन लॉ। तो कहने लगा अच्छा चलो दूसरे शूट पे भी लाना, लगता है कि कुछ काम आता है इसमें। हाँ, yeah. didn't say a word, didn't do anything. The best part is that my sister-in-law gave me full hand. She looked at me. She was pregnant. Yeah. She was 8 months pregnant, and she was going to take an off. She's like, "Do you want to start coming in?" So I started to work as a fashion editor. Okay. So I wasn't given the job कि जी ओनर की है रिश्तेदार तो ये आ गए, मुझसे कोई बात ही नहीं करता था ऑफिस में। मेरा ग्राफिक डिज़ाइनर आज भी मेरा ग्राफिक डिज़ाइनर है और वो मेरे साथ बैठते थे, ही वुड नॉट लुक एट मी। अच्छा सब चाय पीते थे, मैं डाइट कोक पीती थी। फिर मैंने कहा ये तो मुझसे बात ही नहीं कोई करता, मुझे चाय भी पी लेनी चाहिए इनके साथ। सो देन इट वाज हार्डकोर। 262 पेजेस की मैगजीन निकलती थी, out of which 130 were ads and remaining was editorial. Right. So And- you wrote it completely on your own. My first article was, I think it was a topic on cheating, infidelity. Okay. I think we were discussing, Interesting, we yeah. were discussing a topic, and my sister-in-law said, "तुमने लिखना है?" Without realizing that I had gone through this. Yeah. I said, "Yeah." Okay, वो दिल से वो. वो बड़ी दिल से निकली, लिखा मैंने कुछ। ना कुछ ChatGPT Yeah. था, ना कोई Yeah. ChatGPT था और जब दिल GPT दिल था। and then she realized and she said कि would you be okay writing it? मैं कहा हाँ, लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है और क्या हो, you know. Yeah. And I still remember those trend pages जब हम बनाते थे. Yeah. I've had a ball of a time. I wouldn't have it any other way. 2013 was when my father passed away. We were at a shoot in London. We were doing a shoot with Kiran Malik. Kiran Malik at that time used to live in London. Amna Sheikh's first shoot was with us, which उसने men's store के लिए किया था. तो किरण मलिक का शूट था. It was with सानिया मस्कतिया. और आप बाहर के मुल्क में जाके शूट करें ना तो आज भी यही है। आई एम श्योर सारे आपके फोटोग्राफर्स यही बताते होंगे कि एंड स्टाइलिस्ट भी इस वक्त यही बताते होंगे कि दैट्स नॉट योर होम ग्राउंड। Yeah. वहाँ बस सारे काम आपने खुद करने। It's बिल्कुल, never going to yeah. be like You don't किसी have को spot नहीं boys दिया। and- There's no spot boys. There's no Yeah. कोई चाय नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं मिल रहा। And we Yeah. did a shot at Buckingham Palace, and it was beautiful. It was, and as soon as we got done with the shoot, my father passed away in Pakistan. We had to come back, and something happened that I had to take the position of the managing editor. Okay. And so I remember it was 5 days down to Daisy's death. My elder brother said, "I'm sorry, but I need you to be in the office because the magazine goes into print. Because print का एक process बड़ा लंबा होता Yeah, था। yeah. तो अगर वो डिले हो गया आपके आर्ट, आप पैसे एड से बना रहे हो। Exactly, क्योंकि yeah. वो प्रोसेस सारा डिले होता है। एंड आई सेड आई डोंट नो हाउ टू एडिट एंड ही सेड सीख जाओगी, बैठो तो सही। So there were a few friends who offered. Khatija Malik at that time had just stopped working for Libas, and Okay. We had just. This is 2000. This is 2013. 13 ठीक है। अच्छा लिबास 2013 में काम कर रहा था, सब निकल रहे थे। Everything was उस वक्त तो प्रिंट आपका था, and she being a friend, she said कुछ हेल्प चाहिए एडिट में। मैंने कहा नहीं अगर चाहिए होगी तो, and I still remember that's the first day I think my graphic designer became friends with me. उसने मेरे सर पे हाथ फेरा, कहता बाजी हो जाएगा आराम से। Yeah. It's not something, and I think that's when we started, and I became, and my sister-in-law wasn't in to make money out of it. I was there to enjoy but make money out of it. I wanted to make So money. you always had that mindset. It was always that. Yeah. हाँ. कि मैं time दे रही I हूँ किसी think चीज़ को तो। I still am. अब मेरा ख्याल से just the age makes me a bit lazy, but yes, Hustler was something. Faraz Manan, Athar Shahzad,
these were the people who were, you know, they were good Inspiring friends. or- They were good friends. Yeah. Shazia Deen. These were the people who would say, no, you can do it. You're in like safe hands. And they would take care of me, and you had to understand that I did not come from a fashion background. I came from a ठीक very है। protective sister of 3 brothers, an ACCA. बल्कि आई गेस वो भी Yeah. कहते होंगे कि हमें बता दो इसके अंदर क्या करना क्या करना है, Yeah. अकाउंटिंग और मैं अकाउंटिंग का कोई काम नहीं करती थी। अच्छा। कहती थी मुझे पैसे के बारे में बिल्कुल बनाना है, बट आई एम नॉट गोना सिट एंड आई एम नॉट गोना डू दैट। आई Advice लर्नड वगैरह अ की है। लॉट। आई थिंक फ्री हैंड मिला हुआ था ना, जो दिल Yeah. चाहता था करती थी। वी बिकेम वन ऑफ द बेस्ट फॉर डूइंग शूट्स. Yeah. And then we were all friends. Rahil Rao, Rahil Bhai from Diva. We were never competitors. Yes, we worked together. हम competitive काम में थे, but हम लोग किसी का पैर नहीं काटने के लिए वहाँ पे बैठे थे. We would attend fashion shows. We would have a lot of Support fun. each other. Support each other. हम हर Yeah. एक we would sit together, make sure that you know किसी और की जगह साथ रखी हुई है. Yeah. Fashion shows were. I love considered- that. I love I mean, that. as an editor, I have roamed around like, you know, I enjoyed. But for me, I never wanted my face to be out that much. Yeah. I wanted niche to be out there. Imagine करो कि ठीक मेरा है। अपना personal Insta का नाम ही ज़ैनब नीश था. Yeah. And I never changed it. बंदा change ही कर ले. But no, Yeah. I liked. मुझे कोई हंसते हुए, there's a friend of mine, Nail, he would say, ज़ैनब नीश, क्या हाल है? I mean, it was never, and I never took it in the bad sense. Yeah. And yeah, and it's been a fantastic journey. I mean, So आप basically you saw the transition of fashion Yeah. का जो shift एक आया था digital के अंदर. बिल्कुल. So Yeah. you coming from print and now it's in a like hardcore digital Digital, और yeah. social चल रहा है, Yeah. सब चीज़ें चल रही हैं. So you saw the transition. उसके अंदर basically you met a lot of people जिन्होंने आपकी grooming की और जिनके साथ आपकी discussion हुई regarding fashion चीज़ें वगैरह. So what was your main learning on that day? कि यार this is something that you have learned. You know, keep for fashion industry, keep it with you. Any sort of thing कि you still have that thing. with you. See, when I joined work, उस वक्त ना मुझे फराज ने एक बात सिखाई थी. फराज ने कहा था जो अपने साथ लोग काम करते हैं ना, उनको इतना कंफर्टेबल कर लो कि वो कहीं और जाए ना. That means monetarily and emotionally. You know, that would rarely थी मेरी बात. And also one of my first bosses was my elder brother. So when I worked for my elder brother, उसकी भी mind frame यही था. Yeah. कि अपने साथ जो बंदे काम करते हैं ना, वो आपके लिए काम नहीं करते. They work with you. There's a difference between working for someone or working with someone. So like how many people from your original team are still with there. you They're all today? there. They're all there. They're all That's Everybody amazing. here? Everybody there. So turnover rate We is just like have- really low. जिससे मेरा ख्याल से ऑफिस बॉय चेंज होके वापस आ जाता है, लड़ता है, फिर कहता है मेरी शादी हो रही है, फिर वापस आके कहता है मेरी शादी नहीं हुई, तो हम उसको वापस रख लेते हैं. बस एक वो ही है. एक decade आपकी टीम. बिल्कुल. Team सारे एंड आई साथ थिंक डिजिटल के प्रोसेस में ये था कि मैं ना मेरा ख्याल से आई वाजंट वेरी कंफर्टेबल विद हैविंग वेरी यंग पीपल. ये मेरा कसूर था. Yeah. मुझे प्रोसेस नहीं समझ आती थी. ठीक है. एंड टू पीपल drastically changed my mind. One is my digital head, and the other is my head editor, Rubab Rizvi and Samad. These kids, ये साथ ही आए थे. They're best friends. Yeah. So Rubab came in as a head editor. She came at that, और I needed somebody like her in my life. उसका सुबह 8 बजे फोन. अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, ये आपने काम नहीं किया. अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब. अच्छा जी ज़ैनब, आपने ये काम नहीं किया. वो यार इतने फोन आते थे. मैं कहती थी, ये कौन औरत है, ये क्या चाहती है? Is she my boss? She is massively doing a fantastic work right now. She has her own business. She does keto food. Then there was Samad. Now Samad was this guy who was this, you know, एक उसकी जो CV आई थी ना, वो इतनी amazingly बनी हुई थी. तो मैंने उसको देख के मैं कही क्या है? तो कहते हैं full artwork था. तो मैंने कहा what do you want to do in your life? तो पहले चुप करके मैंने कहा पहले सोच कर आओ ना कि क्या करना है. फिर थोड़ी देर बाद फिर आया. कहता है मैंने सोच लिया मैंने क्या करना है. कहता है आप मुझे अपना Instagram दें. And I think that was the beginning. Till now, माशाल्लाह अल्लाह नज़र ना लगाए. He is they're amazing human beings to be in life, not just by work, but making a difference in a personality. Yeah. Making
I just think that they're my kids. I really don't think that they are. I don't even think that they are my siblings. I genuinely think they're my kids. And you know, it's every day how you learn. अभी भी जितनी भी टीम है आपकी वेब की जितनी टीम है वो यू नो इट्स लाइक वेब वाली बड़ी यंग टीम है एक वो अपनी टीम है जो इतने सालों से चल रही है और आपस में उनकी बड़ी दोस्ती है ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बदतमीजी करता है कोई कुछ करता है कभी मैं इनको कहूँ कि मैं कोई पॉडकास्ट शुरू कर दूँ कहते हैं ज़ैनब आप तो कोई गलत बात कर सकते आपका सिस्टम खराब है आप रुकेंगी नहीं आपका लाइफ नहीं जा सकता and there can be that you can say something transition coming back to the question you asked fashion has seen a great shift fashion in 2012 till 2015 was or 16 was all about supermodels and Pakistan has created some amazing supermodels then the celebrity era has took quite of a it came in I mean TV has played a very important role TV is fantastic I mean आपके जितने ड्रामे लेकिन फिर वो सेलिब्रिटी ये हो गया कि सेलिब्रिटीज़ को भी मॉडल्स बनाया गया क्योंकि उस तरह देखें दिस इज यू ऑल्सो हैव टू इवॉल्व विद व्हाट पीपल वांट टू सी people wanted to see if somebody wants to see Aiza Khan in an outfit then they want to see Aiza Khan and if Aiza Khan is looking pretty और अगर ब्रांड बिक रहा है तो आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है it's a win-win situation for everybody but it was a shift I don't think a lot of people understood it back then मुश्किल लगता था ना कि यार अच्छा अब सेलिब्रिटी को लेना है अगर सेलिब्रिटी नहीं कर सकेगी फिर but they I think with all odds it was a great amalgamation कहीं मुझे थोड़ा सा लगता है कि फैशन थोड़ा सा लॉस्ट हो गया and I think COVID also has to play a very massive role in Pakistan for it. We've not. How is that? How is the impact of COVID I think on we have niche? no fashion shows, which is the great loss. बिल्कुल ना, यार I mean, that's so I true mean, वो जो एक रैम्प वॉक वाली चीज थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है Collections की थी ठीक है there is now we have these fashion shows which are live fashion shows on digital. You have to evolve. ठीक है this could be an evolving thing but then if you take a look around across the world सारे fashion shows हो रहे हैं fashion week हो रहा है Paris fashion week हो रहा है everybody is showing their collections and simultaneously also showing on you know on the digital front but I think we still need to find a balance on it एक boom आया था फ्लैटीज होटल में हर हफ्ते एक लॉरेल का कुछ होता था या Fashion किसी show, कुछ yeah. होता रहता हाँ था। basically होता ये था कि they had made PFDC तो हमेशा होता है PFDC did create a platform for quite a few designers I mean people like me my first fashion show attending as an editor fashion editor was a big thing it was the glam and everything वो एक एनर्जी होती है being at a fashion show even like I've been in the audience obviously never did anything else but एक वो पूरा होता था to see the models walk down and वो designer end में आता था and you would have like most of the time there will be Momina Saptan sitting right across me Meher Karim sitting or Anusha Bhavani sitting with me from Sunday Times and they would be regular paper pencil पकड़ के collections लिखना मोमिना ने तो लिखना होता था and then there used to be Amna Isani and there were people who were like Rahil Rao would be sitting in the front I mean we were all there and we've seen that we kind of miss that energy मेरा ख्याल से वो energy miss होती है There's a lot of gap now. a lot of gap और फिर पता है क्या which is it's a great addition which is the influencer culture that's the whole new topic I was waiting for when you said कि evolve वाला thing so that's I wanna ask Yes. exactly So basically how you see the future of like this industry how you see कि what's your prediction you know like इतनी evolvement किस तरह से because everybody have account और उसके account का होता है like 60,000 50,000 followers यार it's normal हर yeah उसकी अपनी एक ऑडियंस है उसमें सुबह उठ के दिखाता है मैं ये खाता हूँ मैं ये चलता हूँ मैं कपड़े ये पहनता हूँ मेरा लाइफस्टाइल बेसिकली ये सारा देखो मेरा ख्याल से पता है ज़ैन सारी बात ये है कि you want to feel connected and you want it to be as real as possible organic कॉफ़ी तो किसी ने भी नहीं है ना yeah I mean I sit down and I watch organizing home videos it's a thing मैं बैठ के देखती रहूँगी कि फ्रिज ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है it's just something which stimulates my mind अब मैं you know I see myself कि हाँ ये वो आपने आइस वाले देखे हैं कि different types of ice Ices, and then there's a person who does comedy on them Shabaz I think वो जो It's ब्लैक really funny मतलब yeah he makes fun of these home because you poor
पाकिस्तान में जैसे I think these influencers are working really hard. One of my favorites has to be Zarmeena Haq. यार She's everywhere. Sona Rafiq. Also being everywhere and being relevant are also two different things. That's true. That's very true. ठीक है? And I think they're doing some fantastic job. इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि देख होने को तो सभी अच्छी हैं. फातिमा हसन बड़ी अच्छी है. I mean I regularly people started making coffee like her. I mean there's a coffee machine and she puts up. I mean there has to be a science behind it. Most probably she wasn't thinking that this is going to become a big thing, but it did, right? Yeah. And then I love these. ये जो funny है भाई एक आरज़ू है. She's hilarious. आरज़ू को आप देखें आप. आरज़ू है, Oh my हाँ. God. और एक तमकीनत है. आरज़ू भी कोविड डेज से हिट हुई. हाँ. एक तमकीनत है. I mean she talks in Punjabi and she's amazing. There's this new person by the name of Faiza. I think that's her name, Faiza. और वो ना कोई पिंडी की पंजाबी बोलती है. She's this PhD and she lives with her husband in Korea. यार amazing. हंस के बंदा पागल हो जाए. So do you realize कि इन सब ने क्या किया? ये सब अपनी reality दिखाते हैं. देखो मुझे जो लग रहा है जो ये आपकी ये फनी इन्फ्लुएंसर्स है ये सब नॉर्मल curated ना people don't want to. आप रिलेट भी कर रहे हो. हाँ कि आपको फनी. अब मुझे लगता है my husband doesn't find it funny. उसको कोई और फनी लग रहा हो मैं कह रही हूँ तुम ये कह. So इतनी वैरायटी है and it's so nice. People are earning money out of it or monetizing whatever they're doing and I mean also providing some sort of happiness to a lot of people. अच्छा I have a question on that part कि I also like हर बंदा नीच देख रहा था on social media पे. फैशन था लेकिन जो ट्रांसफर सबसे ज़्यादा मैंने देखी है that was news. Yes. खबरें और वो जो और खबरों के अंदर भी खबरें फेक न्यूज़ है कि रियल न्यूज़ है. So how you see कि क्या लगा रहे हैं political background shift everything. Yes. I think इमरान खान एक आइकन बनता है. आर्मी का अपना एक सीन है. हर एक बंदा playing their role thing and फैशन उसके पीछे मुझे नजर आता है हाँ कि हर बंदा फॉर एग्जांपल आई सॉ कोई 10 ब्रांड अगर आप एक को फॉलो करते हो एल्गोरिथम ऐसी होती है वो अपने घर से शुरू करता है एक टी शर्ट बनाता है टी शर्ट पे थोड़ा रास्ता सारी चीज़ें होती हैं मैं लिटरली को फॉलो करता हूँ उसके बाद मुझे 19 या 20 ऐसे अकाउंट्स नजर आते हैं जो कि सेम टी शर्ट बना रहे हैं बिल्कुल सेम चीज़ें बना रहे हैं तो वो लोगों ने अपनी एक मार्केट बना ली है तो जो मेरे पास जो मैं चीज़ देख रहा हूँ मुझे तक यार एंड ऑफ डे पॉलिटिक्स ने इतनी गेम अपनी टेक ओवर कर ली है इस चीज़ के ऊपर कि आपका वो फैशन साइड पर रुझान ही उस तरह से आया जो एक यू नो लाइक एक क्यूरेटेड हाँ सो बेसिकली हुआ ये कि आई थिंक व्हेन माय डिजिटल हेड समद came up and when we started covering news we were one of the first people to cover news and when we started doing news उस वक्त लगता था कि ये ना कोई और सी चीज़ है पर समझता था people want to know about it there were उसने कहा कि people want to know about how was your team I think हमारे से भी होता है कि ये पोस्ट नहीं करना yeah we won't talk about this how you I think हुआ ये देखो जब when we were growing up तो वो 9 बजे का एक खबरनामा होता था ठीक है growing up हमने कितना सुना होगा कभी भी नींद आई थी कि दादा या नाना या अब्बू बैठ के देख रहे हैं एंड वी हैव टू 9 से 9:15 आप कुछ नहीं बोल सकते राइट हुआ ये है कि पता है क्या वही अगेन इट कम्स रूट्स बैक टू इवॉल्वमेंट आई कुड बी रिजिड एंड से नो दिस इज नॉट गोइंग और आई कुड से यू नो व्हाट लेट इट गो लेट्स सी हाउ इट गोस सो आई डिड द लैटर if there was an option coming from the team you kind of accept it फटा गया होगा ठीक है पहले मैंने कहा अच्छा पर मुझे लगता था कि मैं ना because मैंने बड़ी जल्दी सीख लिया था कि मैं इनसे बहस नहीं कर सकती अच्छा ठीक है okay and you know because they have the reasons available and कहीं मुझे लगता था ज़हन के I have so much learning to do मुझे आज भी लगता है कि there is so much of learning to do कि मुझे जिस perspective से एक Gen Z देख रहा है ना उससे तो मैं देख ही नहीं रही ना वो बात मुझे समझ ही नहीं आ रही बट इस पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता कि बिल्कुल आता है दे ब्रिंगिंग देयर ओन टेस्ट दे सेड कि दैट्स अ ट्रेंड एंड व्हेन जब हम अपनी चीज करने को कहते हैं कि यार दिस इज इररिलेवेंट तो कहीं शायद वो ठीक भी कह रहे हैं ना आपने अपने एक्सपीरियंस को उस तरह यूज नहीं करना ना यू कांट यूज योर एक्सपीरियंस इन बीइंग लाइक ओ
yesterday we had this conversation. I sat down with someone and I said, मैंने कहा क्या नया करें? तो जो 4 मैंने ideas दिए कहता ये तो नहीं Yeah, चलेगा. and I think it's very important because आपकी audience भी तो अब उनकी audience है ना, like your audience is growing and to like cater to that Gen Z crowd, you have to listen to their voice. And listen, अब जो cases पाकिस्तान में हो रहे हैं, people want to know. People want this awareness. अगर आप देखेंगे, be it this government or be it the other government, they were also they're kind of active. They want to know what's happening. Yeah. You know, they want to know okay, what is going wrong. And if Yeah. your generation, if your younger generation is, you know, are talking about it, that's important. Yeah, I know that fashion has taken a backseat, and it will only hurt the people who have been in fashion. Yeah. You know how much I would want to do a fantastic cover shoot, or you know, bring the whole glam out. Yeah. And yes, that can happen. There are some photographers who are doing fashion in the best of manners. Some designers Pakistan is producing are amazing. Hussain Rehar ke shoot Bilkul. dekhen. Bilkul. They're amazing. Yeah. I just saw Jugnu ka. हाँ. Yeah. Recent वाला shoot देखो, it's beautiful. It's really nicely The truck done. वाला? हाँ. Yeah, it's really And वो बहुत amazing है. आपकी photographers हैं. ये young photographers इतने हैं. आपके stylist उमर नदीम है. Yeah, photographer. stylist is a whole new trend. So when you started, इतना concept था of stylist, or is this I think उस वक्त नहीं था. relatively? उस वक्त नहीं था. उस वक्त photographer was Yeah, how photographer ने how is stylist your बनना है और experience जो been with- shoot करवा रहा है ना, अगर Yeah. मेरी मैगजीन का है तो मैंने mood board बनाना है. तो कितना amazing addition है. Yeah. You know, we. How's your experience been with like stylists? Yeah, I think I'm not. I don't know if people work with me, and I don't want to say that I'm not a difficult person to work with. I mean, people would say that, but I can go with the flow. I can understand. Like कि हाँ मैं अपना एक्सपीरियंस मैं अपनी बात ज़रूर बोलूँगी. अब वो आप ना माने या आप उसको डिफरेंट तरीके से लें, that's a different thing. But it's never going to be like, you know, we did this beautiful shoot. अब हमने सारे digital covers जो किए हैं. We've been doing it. We did one in 2020, right midst of COVID. We did Sabah Kamar in pajamas, night suits. From Sapphire. Fun. And I think it was really fun. And मैं घर पे बैठी हुई थी because I wouldn't go because my I have a you know I had a parent at home, so I didn't want it कि COVID हो जाए तो मेरा मैं फ़ोन पे थी और समद वहाँ पे गया हुआ था पूरा मास्क लगा के मैंने ऐसा लग रहा था कुछ जंग लड़ने हाँ hazmat suit and but see now okay अब जो covers आते हैं 3D covers होते हैं Yeah. there's a vibe to it. I'm not gonna say that I don't like it. I mean, but something which goes viral, Yeah. you've made your point now. It could be something. It could be something not right, but it's going viral. It has to stand out. It has to stand out. It has to. And I do. My firm belief is fashion kahin marega nahi. It's gonna come back. Fashion shows are gonna come back. It's just gonna take a little. You also have to understand we're a third world country. Going through massive changes politically and economically. So I mean, जब तक वो नहीं, these are such things which are affecting every human being, be it you, be it me. We're all experiencing it, and of course these brands are going through it. And हर brand अगर आप देखें आपके lawn के brands, आपके या क्या they are checking out such amazing things. Boom पे तो सब है. Boom पे सब है. Yeah. I mean, if shoes, I remember कि websites पे everybody moved to shopping website Online, yeah. चले गए थे और लोग अपनी कुछ ऐसी behind the scenes sales की वीडियोस दिखाते हैं कि orders आए हैं हाँ packages कमरे में पड़े हैं Yeah. उसकी एक रील जाती है like people real thing देखो पहले रील्स जाती थी जाने लगी उस जमाने में कोविड में राइट उससे पहले हो ये गया था ट्रेंड ऑफ वेबसाइट्स हैड स्टार्टेड 2017-18 से स्टार्ट हो गया था. It was Shopify पे there were companies who were making beautiful websites और काम चल रहे थे. Designers like Khadi, Sana Safinas, Sania Mustafa, they were on the track. They were doing it. It wasn't like it wasn't done. कर तो रहे थे. But I think COVID से वो एकदम boom मिला और then people also realized कि यार वाकई दुकान पे जाने की जरूरत है. Do we need to really go to a store? You have Shahalmi shops on like online now. You don't need to go to like Urdu Bazaar और बैठ के order करो. देखो ना, and they're like they're big designers like people who have put Pakistan on the map like Faraz Manan who've opened up
stores in. They've opened up a boutique in Dubai and doing great, Yeah. catering to the Indian market, the Arab That's market, Just and the Ambani की शादी पे somebody yeah, they're A quite lot of people, quite a few not crowd. one. हाँ Yeah. हाँ, okay, कोई Pakistani because- designer, And then there's yeah. Mohsen Ravid Ranjo opening up a studio in London, and there's Iqbal Hussain who very mutely is getting into the field, but fantastically. बड़े आराम से he's getting into the field, but he's amazing. So these are just a few names. There are so many people who are doing so great. If I asked you, okay, if you have your favorite 3 designers that In Pakistan right now? in Pakistan, who are they? Okay, Faraz Manan is number 1. Number 1. Okay, we're clear on that. There was no hesitation. It was There's like, no hesitation. Thak. There would never be a hesitation with that. I think so. I'm going to divide ठीक three है, people okay. who have who made Yeah. a mark. I think it's Faraz Manan. I think it's Iqbal Hussain, and there's Rizwan Beg. Rizwan Beg. Rizwan Beg is always going to be someone who is, the man dressed up Lady Diana. I mean, sit down with him to understand what really life is. He could give some real life lessons. Can I ask Yeah. something? Because since we're into like wedding industry or सब कुछ Yeah. there are some brides. They feel very lucky when they wear बंटो कास्ट्यूम. Yeah. ये क्या साइंस है इसके पीछे? अच्छा ये देखो, क्या? बंटो मैं आपा जो है basically- ना, मुझे बोला Exclusive? था मुझे- Because it's so cause- exclusive? cause मेरी let's say जो मेरी top notch शादी होती है She's waiting to say something. You और don't जो have मेरी हाँ जो मेरी top notch शादी होती है और जो मेरी one of the brides जो कि let's say बनी गाला की mostly Right. जो होती हैं brides होती हैं they live on that Islamabad side पे mostly they wear that sort of stuff and it's very rare because what they I don't know they feel very proud कि हमने this is बंटो कास्ट्यूम. अच्छा देखो, बंटो काज़मी जो है ना, बंटो आपा is the pioneer of wedding dresses. ठीक है, Karachi mostly brides wear बंटो काज़मी, and so do Lahore brides. बंटो आपा stopped making many bridal outfits. वो वैसे भी काम करती थी. उनके लोग जो है ना, उनकी आज भी उनकी जो फैक्ट्री है, कारीगर है, वो उनके घर के पीछे ही. उनका एक तरीका है. She is the most elegant woman Pakistan has seen. She is. मैंने मुझे पता नहीं कौन है. I have no idea what I have no idea what she looks like. Yeah. So मेरे पूरे ख़ानदान के उन्होंने जोड़े बनाए थे. I met her at Hum Awards. तो मैंने जाके, मैं उन्हें कभी मिली नहीं थी, तो मैं जब उनके पास गई तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी, and I gave a reference to a family member. So she looked at me and she said, you should say you're Zainab Malik from Niche Lifestyle. I don't need that reference. You made a mark on your own. And then I was like, that's where I was like, That was like a moment for you. I've made it. This was 2017-18 में. Yeah. बंटो आपा ने अब जोड़े outfits बनाने कम कर दिए शादियों के. She's become very selective. Yeah. But to own an outfit from Bhanto Kazmi is owning a piece of art. Yeah, that's like कि एक साल पहले बताना पड़ता है type जी, scene जी, होता जी, है, जी. 2 And साल I don't think she's very easy to reach also. Like she doesn't have like उस तरह She का does have design. there is a procedure to it, but जोड़ा इसलिए साल पहले बताना पड़ता है ज़ैन, क्योंकि वो कारीगर हाथ से बना रहे हैं जोड़ा. वो जोड़े में बहुत मेहनत जा रही है. वो ऐसे जोड़ा नहीं है. वो आपकी पर्सनैलिटी देख के करती हैं और वो एक full on interview type. हाँ, there is like a proper thing to it. वो couture, actual couture है ना. It's not like the. couture के अलावा उन्होंने पुराना काम और उनका एक तरीका ही अलग है. That's a league on her own. Yeah. And now all your big designers, major designers, actually take this much of time. And who do you think the upcoming जिन्होंने आके वक्त देखो, आपने ये भी देखना है कि आप बहुत सारी दुनिया को ना डिवाइड कर सकते हैं कि there will be people who will always be Faraz Manan fans and they will only buy Faraz Manan. There will be people who will I think Faraz Manan, Rizwan Beg, Bhanto Appa, these are the people. Iqbal Hussain also is in this field right now. ये वो लोग हैं जो लोग इनके outfits पहनते हैं वो इन्हीं के outfits पहनेंगे. And then there are also people who are catering to a different genre, which could be M&R, which could be Hussein Rehar. Okay, there also then there is someone like Sania Muskatia, a forever favorite. Yeah. Forever favorite. I mean, like you can't even
begin to explain कि वो हर एक की एक trousseau में वो जोड़े तो होंगे. Then there's Nida Azbar and then there's Misha Lakhani. Yeah. You know, they will always be. I think the best part right now is आप हर डिज़ाइनर जो है ना, there are so many designers और वो हर एक किसी ना किसी को cater कर रहा है. Then there's Dina Rahman. There are people who love Dina Rahman. And there's Kamya Rokni who makes these gorgeous pieces of art. Yeah. So you know there is, and you will, when you will have sit down any bride. Rano also. Rano Abrams, yeah. Rano Abrams, Absolutely. Like 2009, 2011 we graduated, but back in the days of चीज़ें पता होती थी, we also go for internships के लिए photographers Right. I remember HSY is also good. Yeah, of course, HSY. आपको पता है कि HSY इतना famous है abroad. Yeah. कनाडा और लंदन में जितनी आपको HSY की brides मिलेंगी कहीं नहीं मिलेंगी. Again, HSY has also played a very vital role in my journey. He really was. No, and he's played a very vital role. He was like someone who would explain me so many things. And he was at the peak of his career, which he still is. Surprisingly, it's amazing. Yeah, he has had in the 30 years. He's still doing so well. But and I think he just gave such nice advices. पता है क्या? In your journey, अगर आपको 4-5 लोग ही अच्छे मिल जाए ना, किस्मत बड़ी अच्छी जगह ले जाए. You just have to have, and also having a positive thought. देखो ना, कभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि you could have gotten into influencer lifestyle. No, I couldn't. It wasn't meant for me. Yeah. This is not something which is meant for me. Straight remarks सारे हर चीज़ पे product review पे क्या है ये क्या है? मुझे याद है Honest reviews. मुझे किसी मोबाइल कंपनी ने कोविड के बीच में भेजा. उन्होंने कहा ये फोन लगा दी. मैं कहा लोग मर रहे हैं, मैं फोन लगाऊं. ये किधर की एक, and I could be earning money, and yes, no, who doesn't want to earn money, right? Yeah. But मैं वही कह रही हूँ ना कि हर रोज हर एक बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता आपको वैसे आती है इस तरह की कुछ like बिल्कुल ही absurd request which you're like ये नहीं मैं लगाऊंगी? Does that happen? है. एक दफा वीडियो आई पोस्ट तो I mean like like people send you stuff कि लगा दे. मेरे ऑफिस में ना मेरा जो someone, because I play a vital role in the marketing as well. Yeah. I'm involved in it. मेरे marketing का जो मेरा marketing head है ना, he was a runner when he came to the office. Right now he's my marketing head. Okay, and he does everything for me. ठीक है. और मेरी लड़ाइयाँ भी सबसे ज़्यादा उससे हैं. Like लड़ाई ऐसे हो जाएगी, वो कहेगा मैं तो आपके भाई को फोन करते हैं. ओह अच्छा ओके. और वो कहते थे बिग बॉस को कॉल करता मैं मेरे मियाँ को फोन कर, पहले कहता भाई को, मैंने कहा मैगजीन तो मेरी है, भाई को फोन करके क्या करोगे. So we've had so many challenges हम दोनों के साथ. तो देखो पोस्ट तो पोस्ट होती है, तो वो पैसे लेके पोस्ट बड़ा भी होता, थोड़ा बहुत होता है कि क्रिंज क्या है. हाँ. क्रिंज को फिल्टर किस तरह करना है. समझ तो देखो हमारे पास वीडियो में आता है, समझ कहता है दिस वी कांट, वो लिख देता है. अच्छा और मैं कभी कभी होता है ये, आई हैव टू से इट, आज आई एम सेइंग इट, मैं समद को सेपरेटली मैसेज करके कहती हूँ समद रिजवान को कह दो कि ये नहीं होगा क्योंकि मैंने कहा तो उसने तो करने से आपा. तो वो मुझे समझ कहता अच्छा चलिए ठीक है. बट नोइंग दैट एक दफ़ा एक वीडियो आई थी समवन एट अ वेडिंग और पैसे फेंक रहा है. ओके. और वो हो रही थी कवाली हो रही थी. एंड कवाली हो रही थी एंड हमें पेड पे आई थी. तो रिजवान सेड नो वी कांट डू इट. उन्होंने जी कहा, धमकी दी कि हम अच्छा धमकी. हाँ उन्होंने कहा हम आपके बॉस को फोन करें. दे मेंट योर ब्रदर. नो दे मेंट समवन अबव दैट. मैं कहा प्लीज ट्राई करो जरा कॉल. मैं भी तो देखा कि मैंने कोई फोन कर रहा है, मैं कैसे करें. तो उसने मुझे he gave me a call and he was very rude. Then I had to make a few phone calls by the way. They will always be. कि उसने कहा मैं आपको देखना क्या. हाँ ईगो हर्ट होगी. मैंने कहा तुम पैसे के ऊपर चढ़ रहे हो, जिस पैसे के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं. I mean I think it's disrespectful on so many levels. Yeah. And but there will be things. ऐसा होता है like COVID में हमारे पास we weren't charging anything which used to come from Aga Khan, Domex, it used to feel so pathetic कि आप डिटॉल से पैसे ले रहे हो, क्योंकि आप लोगों को समझा रहे हो कि ये चीज़ disinfect करना है. And but because those were the only ads which were coming, and
they were that very- does hurt the business. Yeah, and they were very Yeah. depressing times. I think depressing time in the sense कि अल्लाह ने इतना दिया हुआ था और मैं कहती हूँ जितना हम शुक्र अदा करें कम है that we were at that position that we didn't want to cut anybody out. We didn't want to cut anybody's Yeah. salary. मैंने कहा हम चलाएंगे जैसे भी चलेगा हम चलाएंगे. The good thing that I saw, I believe, that's one of the only few pages जहाँ मैं देखता हूँ, you guys really talk about female empowerment sort Yes. of things. मैं हमेशा नजर आता है बेशक कोई खातून किसी स्विमिंग कॉम्पिटिशन जीती है या किसी बैडमिंटन के अंदर किसी चीज़ में जीती है. I always saw कि you guys always This push again that. is अभी it's भी the team. पाकिस्तान में Yes. हुई थी, this she won in swimming, Yeah. and they back they posted हाँ. like that Yeah. is such good stuff. And this also and the great part is celebrities repost us. We are mashallah Yeah. that's Yeah. how and actually office में भी बहुत रुझान है ना. Office में है औरत मार्च पे ये सब जाएंगे. they भाई इनका That's एक great, that's that's commendable. their opinion. Yeah. Listen, I mean who am I to even say anything about it? बिल्कुल. ठीक है Yeah. ना एंड उनका एक है देखो they're making some amazing content. ठीक है और मेरा ख्याल से the key is don't push someone कि उससे इतना काम ना चक आउट कराओ. काम को ना बंदे को एंजॉय करना Enjoy चाहिए. it. Yeah. The day the work becomes a chore, that day it means that you gotta shift because it's no Yeah. more fun. And there Yeah. will be ये अब मैं ये नहीं कह रही कि बंदे नौकरी छोड़ के कि बैठ हर जाए, वक्त मजा। but Yeah. फिर भी थोड़ा सा Yeah. रियलाइजेशन ज़रूर होनी चाहिए. And by the end of it अगर कहना है ना the new generation has so much to give. और उनको सही तरह समझाया जाए. कोई मुझे जब कोई आके कहता है ना नो ये लोग बड़े बदतमीज हैं ये बड़े लेजी हैं Yeah. यार फिर कुछ ना कुछ तो हम भी गलत कर रहे होंगे ना. That's it. ठीक है ना भाई ये तो नहीं हो सकता ना मे बी तुम्हारा दिमाग Yeah. बहुत ऊपर है और तुम्हें नहीं समझ आती उसकी. आई थिंक उनमें बहुत एक हासिल करने का भी ट्रेंड है जो इवन लाइक मेरी जनरेशन में नहीं था. एंड आई अगेन थिंक कोविड हैड अ लॉट टू डू विद इट बिकॉज व्हेन देयर यूनी स्टार्टेड कोविड आ गया. सो लाइक यूनिवर्सिटी शट डाउन, दे वर एट होम, दे वर एट दिस एज वे दे वर लाइक के अच्छा कुछ करना है. दे ऑल हैड देयर लिटिल साइड बिजनेसेस. कोई कुकिंग का बिजनेस खोल रहा है, समवंस सेलिंग परफ्यूम, Yeah. समवंस डूइंग समथिंग ऑन देयर Yeah. ओन. सो Making लाइक आई डोंट dishes. एवर Making रिमेंबर dishes is a थिंकिंग way. अबाउट हाउ टू अर्न मनी इन कॉलेज. मैं तो ग्रेजुएट होके आई वाज लाइक अच्छा अब करना पड़ेगा कुछ. बट दीज किड्स लाइक आई सी देम इन सेकंड ईयर थर्ड ईयर से दे ऑल हैव देयर साइड गिग्स I think going. all of them also want respect. They do, yeah. I think they are very very strict on that. Yeah. कि you Yeah. can't आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते. हाँ, you I mean, can't you have talk to be down very- to them, There is a very yeah. thin line. Tweet चला जाएगा. हाँ, there is a Cancel. बिल्कुल. And they're very clear when they're offended. Like I've had them say to me, "I'm offended." You हाँ. said this, I'm offended. हाँ, और ये मेरी बात तो करनी चाहिए थी. I was like, I couldn't ever imagine saying that to my boss. My husband just shifted from the US 3 years ago and he's started to work here. So I think for him also it was an eye opener. ये नाराज बड़ी जल्दी हो जाता है. Yeah. क्या करना है मैंने कहा बस. Yeah. You have to Like, listen to that. मेरे लिए तो I would sometimes think कि पंजाबी works really well. I would नहीं यार मेरा कोई इस तरह का मतलब नहीं. Like I can I think the Yeah. अच्छा हम बात कर रहे थे like evolve fashion everything सब चीज़ें. फैशन शो की जगह अब एक नया सीन होना शुरू हो गया. It's like a wedding events. So मेहंदी पे पूरा एक शो Real fashion show. जिस पे पूरे डांसेस होते हैं. Yeah. I guess ये चीज़ हो रही है. हाँ. और इसने बड़ा एक मार्क सेट कर दिया कि इसकी शादी ऐसा है तो हमने ये करना है. हाँ. Adaptation of wealth, adaptation of seeing कि यार इसमें इसने ये किया तो इससे बड़ा सेट लगाना हमने. आजकल वो बड़ा हमारे इंडस्ट्री में फेमस One up वाली चीज जो आप कह रहे बट हैं. हमारे इंडस्ट्री बड़ा फेमस हुआ. फॉर एग्जांपल किसी की शादी अगर हो रही है कुछ भी हो रहा तो जब भी कोई इवेंट प्लानर के पास वही है हमें पता लगता है कि यार मुझे हीरा मंडी वाला सेट लगाना है. हाय अच्छा. ठीक है वो जो Wow. संजय लीला स्टाइल है हाँ, वो yeah. तरह के सेट अच्छा. लगेगा हमारा. और जो कपड़े भी आएंगे मनीष में वो तरह के कपड़े आते हैं तो पूरा एक वो शो वाइब जो है वो ऐसी Exactly. होनी चाहिए. वो वहाँ पे बेसिकली जा रहा होता है. तो आई थिंक फैशन जो इवॉल्व हो रहा है हैवी किस्म का वो इस और तरह- वो जो इन चीज़ों पे Yeah. आई थिंक
मेहंदी पे प्रॉपर डांसेस चीज़ें वगैरह, देन बारात पे स्पेसिफिक तरह की रुखसती या कोई जैज Yeah. बैंड आया, या वलीमा पे प्रॉपर कोई डे टाइम इवेंट है, उस डे टाइम इवेंट की वाइब डिफरेंट होगी. So I guess people what they used to wear on the ramps, they moved to. So I think Pakistan में एक चीज़ है जो which is always going to be a booming industry. It's the wedding. It's the weddings, yeah. No, शादियाँ नहीं रुक रही, ठीक है ना? COVID में भी शादियाँ हुई. COVID में भी Yeah. शादियाँ, सिर्फ वही तो चला है. Yeah. ठीक है? Yeah. But I also think where you say that these massive wedding things have come up, like big sets, intimate weddings have बिल्कुल. also taken a very big role and still Yeah. are there. Yeah. Yeah. Intimate शादी होगी. People have started to pay. एक और बड़ा अच्छा पाकिस्तान में shift है. Not talking to about the topic which you are talking right now is fitness. ठीक है? Yes, तो yes. जब होता ये है कि when you look good, you feel good, you want to dress up. Yeah. So it's like a circle. धड़ाधड़ जिम खुले. धड़ाधड़ जिम खुले, Yeah. फिटनेस के और खाने ही gym- कितने हैं. gym Yeah, की- there's so There's many. such amazing meals. Like यार, Gym wardrobe का Yeah. बहुत on हो गया. हाँ, wardrobe, Right? Yeah. gym गैर बड़ी है, and so it has Awareness. it's a circle, being ना? aware, yeah. You look good, you feel good, you want to dress up, Yeah. and that dress up, you're looking forward to a wedding. Yeah. Goals बना लिए लोगों ने. दिसंबर में शादी है, I need to Diet शुरू कर दो. look good. तेरे भाई का डांस नीच पे पोस्ट हुआ है. ये एंड में हुआ है तेरे भाई का डांस Niche Yeah. पे post हो रहा है. वो नीच पर उन्होंने शेयर किया. Yeah. That's I mean, big big thing for them. हाँ, okay. हमारी अक्सर पाकिस्तान के brides वगैरह होती हैं, there's like you guys share random stuff. Yes. Okay, what Yeah. is wearing, Yes. यहाँ पे what you curated yourself. Yes. Yeah. And when they go like yeah, वो हमारा नीच ने भी share हाँ. किया था, like you know. I mean the reason we I think we लोगों में ना awareness कपड़ों की बड़ी अच्छी है. I had a relatively a smaller wedding, but it was like everybody was enjoying themselves. और ठीक है, मैं Yeah. मान रही हूँ जहाँ आप कहते हैं कि लोग अपना शोशा भी बड़ा करते हैं. वो देखिए, they will always be people who will do that, and we can't deny it. We kind of like it also. Yeah. I mean, I would be like, no, I don't like it. Oh, I mean, Yeah. a nice elaborate wedding everybody likes, but equally saying for myself I would have chosen a small. आपकी post COVID हुई थी ना? मेरी तभी हुई है. So Okay, it was yeah. last year. It was last year, and it was 350 people. That's and I quite. think 350 people out of 350 people, 325 were dancing. That's fun though. Everybody's it was enjoying. a fun wedding. Everybody's and, involved. So yes, I mean पाकिस्तान में ना शादियों का season it's amazing. हमने इसको इतना culturally we're Yeah. doing so well with this. And आपके पास पाकिस्तान में women want to dress up well and they pay attention to it. They pay attention कि क्या outfit है. आजकल तो बिल्कुल. men do. How was your experience as a bride, like generally, like getting everything together and the whole planning and like? Okay, so I might be the only bride who went once for a fitting to Faraz Manan. Okay, once. And once I did. Of course you wore Faraz Manan, yeah. I wore Faraz Manan on my wedding, and I wore Rizwan Baig on my walima. And Rizwan भाई को मैंने बस फ़ोन पे बता दिया था कि रिजवान भाई I should look very surreal और बड़ी प्यारी लग रही है. और फराज के पास I was sitting और फराज ने कहा हम सोच रहे हैं तुझे कोई पिंक का एक शेड दें. मैंने कहा हाँ. Yeah. That's it. There was no more conversation. मैंने कहा बस फराज मुझे बस मोटी नहीं लगना चाहिए. कहता बस थोड़ा खाना कम का. And I was like अच्छा चलो ठीक है वो भी कोशिश करती हूँ. कहता ज़्यादा नहीं पर ठीक है शादी तक तो थोड़ा कोशिश. And that was it. There was no more conversation. Just one And fitting. that was it. I'm a sister of 3 brothers. I think I was more interested कि रज़ा क्या पहनता है. तो हम दूसरे दिन रज़ा को लेके गए. तो Raza was sitting and Raza. What did he wear? So he wore Faraz as well. Okay. So it was a Nehru coat. So I was explaining it with such sparkle in my eye. Faraz खड़ा हुआ था मैं कहती मैं क्या पता है because my husband's a polo player. So he has long hair. तो मैंने ना बाल कहीं से उसके पीछे से पकड़ के मैंने कहा देखो पोनी बनाएगा तो कितना अच्छा लगेगा. And Faraz was looking at me and he was like भाग जाएगा. ये भाग जाएगा छोड़ दो इसको ऐसे. And so my husband wore a lighter shade of pink. It was off-whitey pink, and he said I did that because you wanted it. And, So nice. That's so nice, yeah. I mean knowing, and then with Rizwan Baig, it was Rizwan भाई ने बहुत beautiful मेरा Yeah. white outfit बनाया, very regal. It was Yeah. gorgeous, and I was like the day of the wedding I said
imagine it's the day of the walima. I said, Rizwan bhai, मुझे लगता है कमीज बहुत heavy है. He said, I knew you were going to say it. There's another shirt. So they are not only people who have stood by me, but they have played such vital role in my Wedding is life. like a big day for you. You so know, and then on my mayu I wore my mayu was hosted by Rubab and someone they had done it and That's I so wore sari. sweet. Yeah, it was beautiful. मेरे सारे ऑफिस वाले आए हुए थे. मेरे ऑफिस वाले मेरे खानदान से ज़्यादा रो रहे थे. Like मेरी माँ ने कहा था ये क्यों रो रहे सारे and मैं कहीं नहीं जाती थी. ये दोनों बच्चे मेरे सारे काम करते थे. Like we have these amazing funny memories and so I was introduced by my Raza was introduced to me by my best friend Khuba. Okay. And Khuba did this fantastic dholki. I mean, I wouldn't have had my wedding any other way. उसने एक close friends की ढोलकी की थी, which was so much fun. The country was going through a very political worst time ever. It was during the yeah. ये वाला तो बहुत ही खराब था ना. ये तो मैं कह रही थी मुझे कोई सिग्नल तो नहीं दे रहा था कि ये शादी करनी है नहीं करनी. And she hosted this beautiful dholki and it was amazing. All people who I love and adore were there. We enjoyed and my family was there. And then there was the wedding was hosted by my brother and my sister-in-law, which was great. And it was my niece, my nephew. They have their mashallah like 25, 22 years old, and they played these amazing roles, taking care of. Sounds like a really smooth wedding. No, it was, I could have been. I was a bridezilla. अच्छा you were? अभी तो मुझे ऐसे लग रहा था. निकाह the time. The only moment I remember that was the निकाह. Oh my God. क्या हुआ? And so basically हुआ ये था कि शादी से ना कोई 15 दिन पहले मुझसे my niece said, is everything under control? Yeah. And I started crying. We were coming back from Pilates. मैंने कहा मुझे तो लग रहा है मैं भाग के शादी कर रही हूँ, कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा. कैसे आप and उसने कहा जो तुमसे कुछ पूछना था. मैं कहा कोई पूछ ही नहीं रहा. मैं कहा एटलीस्ट ये तो पूछो ना कि कोई काम करे. ठीक है. Actually मैं बहुत एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ. Oh, so everybody assumed कि खुद ही कर रही थी ना, तो उन्होंने कहा ये कर लेगी खुद ही कर लेगी. And I have genuinely thought कि I think this is the impression what independent women give. भाई हमारा भी ख्याल रखिएगा. ये अच्छी बात. And निकाह पे I think we had so many photographers. I have no idea. एकदम से वो. अच्छा मैं एंटर हुई हूँ, एक तो गर्मी. ठीक है. Hmm. में शादी हो रही थी. ठीक है. ACs इतने लगे हुए थे. I walk in and you have to understand I'm not a woman who's usually in a lehenga. Yeah, and the makeup and the lehenga decked up. फिर आज कह रही हूँ दुपट्टा उतार के कहता. He walked in and he looked at me and he's like, मैंने कहा फराज ये हटा दो please. मैंने कहा I need this to be removed. कहता ना नहीं नहीं जा रहा. And it was a trail. Oh, उसका weight भी होगा. Weight था. Weight इतना नहीं. अच्छा मैं बैठी हूँ तो photographers में ऐसे आए. मैं कहा आप कहाँ से? अच्छा. That's what I did. मैं कहा आप कहाँ से? उन्होंने बताया वो कहाँ से. आप कहाँ से? उन्होंने बताया. उन्होंने मैं कहा कितने लोग हैं आप लोग? उन्होंने कहा चाचा. मैं कहा एक बंदा खड़ा हो. My husband to be held on to my hand and he's like, yeah. I have family here. Everybody knows how I am. It's too late to not do anything now. तो मैंने कहा चलें एक बंदा निकले. अच्छा आपने माइनस कर दिया. हाँ मैंने कम किए क्योंकि रश इतना था. मैंने कहा हो जाते हैं. And then it was just like they made me talk to someone on the phone. I started crying and I was like, "Yaar, meri somebody on Skype too." Yes, it was my brother. He couldn't make it, so I mean, मैं ऐसे देख रही हूँ और मैंने रोने मैं कह रही हूँ, "Holy shit, ये तो मेरा मेकअप ही खराब है." And I'm like, my sister was like, "क्या कर रही हो?" And I'm like, रुबाब कह रही है, "No, नहीं मेकअप एक बंद करो ना इसको, ये फोन बंद करो." And yeah, मैंने आपकी I think वलीमा था उसके खाने की बहुत तारीफ सुनी थी. So I had some family there as well, and they were just like the food. अभी तक बात होती है. The food at that wedding was we still talk about it. It was great. I was here, man. Yeah. They were my friends had done amazing dances. At the age of 41, I was making everybody dance. I mean, every single person danced or prepared किया है. It's amazing how my best friend हर रोज अपने घर ढोलकियाँ रखती थी.
Oh. मेरी नीस अपने मियाँ के साथ जाके डांस सीखती थी. My nephew was there for 72 hours. और 72 hours से मुझे लगता है 60 hours तो वो डांस कर रहा है. And there's this video of my mom dancing. And end में रुखसती में अम्मी कह रही बस जाओ, बस बहुत साल तुम मेरे पास रह गई, अब तुम चली जा सकते. But what do you think about like having expectation शादी पे? Do you think होने चाहिए नहीं होने चाहिए? कि शादी कैसे जाएगी? किसके like bride के हर किसी के as a- expectations होते हैं. Bride के perspective से कि See, the bride is going to be the last person who's going to be enjoying the wedding. That's true. अपनी शादी तो कोई नहीं एंजॉय करता. You have to Yeah. understand that कि कोई अपनी शादी नहीं, कोई कहता है ना कि आप enjoy, मैंने बहुत एंजॉय की है, बट स्ट्रेस भी था ना कि do Yeah. things go the proper manner. yeah. जा रही हैं, सही जा रही हैं, नहीं जा रही. But you know the best thing, which is very difficult to do, go with the flow. Let the wedding just be. मेरे से तो नहीं हुआ था यार. नहीं, वो किसी Tears से भी every नहीं other होता. day. किसी दिन मैं तो दिस वीडियो में हमना नियाजी हैड पोस्टेड, मैं ऐसे करके ज़ैन लोगों की टीम को कह रही थी कि पीछे कैमरा करो, उधर डांस हो रहा है, मुझे ना दिखाओ. Like imagine. Yeah. So I was on duty at that time as well, but yes, it was a beautiful day. That keeping in mind. Yes. Again, thank you so much. You're most welcome. And there's so much whenever we meet you, there's almost so much to learn. हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है regarding fashion, regarding our industry or like Regarding you also. yeah, Yeah. there's like- Regarding life Yeah. in general. So हमारी भी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं Thank you so कि much. Yeah. Thank you. keep doing your hustling what I think Yeah. and Yeah. किस्मत will take you there. हाँ बस अब किस्मत should play a vital role. हमारी Thank किस्मत you. हमारी किस्मत भी इसी तरह से चमक जाए. Inshallah. Yes. Inshallah. Thank you so much. Thank you so much Thank you for so much. coming. Thank you. It was lovely. Bye, Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. It was fun.